Assalamu alaikum. This is your host Uffaira and you are watching Lazeez Cuisine Ramadan Special. Lazeez Cuisine Ramadan Special में आप सीखते हैं बहुत अच्छी नई सी रेसिपीज़ और जिनसे सीखते हैं वो आपकी भी फेवरेट है और मेरी भी. अस्सलाम वालेकुम नाहीद आपा. वालेकुम अस्सलाम. रमज़ान मुबारक हो. अस्सलाम वालेकुम. रमज़ान मुबारक and wishing you all the best for this holy best month of the year. اور آپ سب بھی روزہ رکھ رہے ہوں گے. Everybody is fasting, the children are enjoying, the whole family is together. This is the best thing when the family is together for the dinner, for the namaz, for the tarawih. This is the best. Children love this time of the year because everybody, the father's there, the mother's there, everybody is together eating, cooking and doing all the ibadat. So we should follow this throughout the year تاکہ when they have, the children feel very happy when the parents are together and everybody is invited and everybody is there and there's a lot of barakat on the dastarkhan. So this is the month, make use of it because it just flies away. بالکل. جہاں تک بات ہے رمضان کے مہینے کی تو رمضان کا مہینہ از آل اباؤٹ grabbing the blessings, but sometimes we got into panic, sometimes we get frustrated, sometimes we have burdenized ourselves with a lot of things. تو how to manage رمضان تو وہ ہم جانیں گے اور اس پہ ہمارے ساتھ روشنی ڈالیں گے فیصل عزیز بندگی صاحب. السلام علیکم فیصل صاحب. وعلیکم السلام. خیر مبارک. فیصل صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں آج کے روزے میں آج کے ایپیسوڈ میں تھوڑا سا گائیڈ کریں کیونکہ رمضان میں کچھ لوگ روزے رکھنے کے بعد یا سم ٹائمز ہوتا ہے کہ بی پی ہائی یا لو ہو جاتا ہے تو اس میں فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں, غلط بیہیو کر رہے ہوتے ہیں اور صبر و تحمل کا تھوڑا سا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے. ہم آتے ہیں آپا کی طرف اور آپا سے جانتے ہیں کہ آج ہمیں وہ سکھا کیا رہی ہیں. السلام علیکم. میں کیا سکھا رہی ہوں, I'll tell you one thing. آج میں نام بتاؤں گی. I'll just give you the name what I'm making now. You have to guess, is it for sahur or is it for iftar? میں very simple dish but you will love it at the end. It is murgh papad. Okay, murgh papad یعنی کہ chicken papad. Everybody knows what is papad. مرغ ککڑ تو سنا تھا, مرغ پاپڑ آج سن رہے ہیں. یہ I just gave the name just now. Yes, just now I gave this name. So just guess, what is it for sahur or is it for iftar? Okay, so you are going to decide that for which time this recipe is going to be used, like for sahur or for iftar. ابھی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ریسیپی کارڈ کی طرف. So let us note down that what are the actual ingredients for this recipe and what are the quantity for that. Murgh papad. Ingredients: boneless chicken cubes 300 grams, green chutney 2 tablespoons, nigella seeds 1 pinch, salt as required, garam masala powder 1/4 teaspoon, turmeric powder 1/4 teaspoon, yogurt 2 tablespoons, egg 1, crushed papad 1 cup, wooden shashlik sticks as required, oil for frying, yogurt for serving, green chutney for serving, fried papad for serving. So we have noted down the ingredients for the recipe. اب آپا آپ please guide کیجیے کہ what should be the steps for this. اچھا, for this we will be using chicken cubes, boneless. We will use green chutney which is made of coriander, green chilies and garlic. Okay. And salt and lemon juice. ٹھیک ہے. We'll be using eggs, salt, kalonji, sunnat, and we will be using black pepper, haldi, garam masala and red crushed chilies if you want, if you have a lot of chilies. Otherwise this green chutney is right enough, and little yogurt and of course papad. How are we going to use the papad? You'll have to wait for that, and we'll marinate it, and then the step will be later on. So now you have to sit and guess, but it will be something different and it will be something very delicious. Okay, so this was our recipe. اور ہم اب موو ہوتے ہیں ہمارے اسلامک اسکالر کی طرف جن کی باتوں میں بڑا اثر ہے, جو بہت بہترین طریقے سے باتوں کو ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں, فیصل عزیز بندگی صاحب. فیصل صاحب, ہم جانیں گے کہ رمضان میں ہم کس طریقے سے صبر و تحمل سے کام لے سکتے ہیں. رمضان میں صبر و تحمل سے کام لینے کے لیے رمضان کے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہوگا کہ رمضان کا مقصد کیا ہے. مقصد ہے
या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ऐ ईमान वालों हमने तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ किया था, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी बनने का मतलब ये होता है कि जहाँ अल्लाह रोके वहाँ रुक जाओ, जहाँ अल्लाह बढ़ने को कहे वहाँ बढ़कर वो काम करो। ज़िंदगी को एक डिसिप्लिन में लेकर आना, एक ज़िंदगी को एक ऑर्डर में लेकर आना, यह है तक़वा, अल्लाह के ज़ाब्ते में, अहकामात के ज़ाब्ते में आना। अब रोज़े के अंदर अगर भूख प्यास इसकी शिद्दत की वजह से तबीयत में गुस्से का एहसास पैदा हो और उस गुस्से के एहसास को हम कंट्रोल ना कर पाएँ, इसका मतलब यह है कि हम रोज़े की अदायगी में गलती कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ा तो बताता ही ये है कि तक़वा अख्तियार करो। तक़वा ये है कि जहाँ अल्लाह रोके वहाँ रुक जाओ। गुस्से का गैर ज़रूरी इस्तेमाल आम ज़िंदगी में भी नापसंदीदा है, रोज़े की हालत में और ज़्यादा। तो गुस्सा हो या अगर तबीयत में कोई ऐसी बात हो जो मिजाज को नागवार गुज़रे, तो उस पर बहुत ज़्यादा शदीद रद्द अमल का इजहार करना, वो भी रोज़े की तहज़ीब के ख़िलाफ़ है। रोज़ा सिर्फ़ एक मुअय्यन वक्त में भूख और प्यास का नाम नहीं है, रोज़ा एक मिजाज का नाम है, शख्सियत का एक ज़ाब्ते का नाम है। शख्सियत में ज़ाब्ता ऐसा हो कि जब आपको भूख नहीं लग रही, अल्लाह का हुक्म है तो उठकर खाएं सहरी में, और जब दिन में भूख लग रही हो, अल्लाह का हुक्म है कि ना खाओ तो ना खाएं। यानी हमने अपने आप को पाबंद कर दिया कि ए अल्लाह, जब तू कहेगा खाओ तो हम खाएंगे, जब तू कहेगा ना खाओ तो हम नहीं खाएंगे। इसका मतलब यह है कि हम ज़िंदगी में आदत डालेंगे, जिन कामों का तू हमें हुक्म देगा वो काम हम करेंगे, जिनका तू हमें हुक्म नहीं देगा, जिन कामों से रोकेगा उनसे हम रुक जाएंगे। इंशाअल्लाह हमें पूरी ज़िंदगी इस पर अगर कंट्रोल करें तो रोज़े से ये आदत डाली जा सकती है अगले 11 महीनों के लिए। बेहतरीन, बहुत प्यारी बात आपने की है। जो एक समअप होता है वो ये कि रोज़ा, बीइंग इन फास्ट, इज़ नॉट जस्ट ऑल अबाउट डिटॉक्सिफाइंग योर बॉडी, बट इट्स ऑल्सो अबाउट डिटॉक्सिफाइंग योर सोल फ्रॉम ऑल द बैडीज। स्टे ट्यून टू इकरा टीवी। आप देख रहे हैं लजीज कुजीन। हम आते हैं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। Murgh Papard. Ingredients: boneless chicken cubes 300 grams, green chutney 2 tablespoons, Nigella seeds 1 pinch, salt as required, garam masala powder 1/4 teaspoon, turmeric powder 1/4 teaspoon, yogurt 2 tablespoons, egg 1, crushed papad 1 cup, wooden shashlik sticks as required, oil for frying, yogurt for serving, green chutney for serving, fried papad for serving.